So when we were discussing some basic concepts, ठीक है, आपके basic concepts वीडियो में या फिर क्लास में भी आपने सुना होगा, जब हम large set of data के साथ काम करते हैं, we tend to have some features in Excel that would help us to work with large data. For example, you can freeze your panes, you can group your worksheets, right? So worksheets group करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे sheet को click करके फिर control करके you clicked on another sheet and it gets grouped. दोनों same color हो गए ना, if you could see in the bottom of the sheet. Now similar way में आप rows और columns को भी group कर सकते हैं, ठीक है. आपको अगर कोई भी set of rows या columns group करनी है तो पहले आप उस row को select करो, then go to your data tab. You will find something called an outline over here, outline group. उसमें से अगर group में जाके group click करोगे, so you can actually group, say for example if I want to group this one and this one together, I can click on group, so these two got grouped together. If I am clicking a minus, ये दोनों hide हो जाते हैं. You can click on plus and you can open it, ठीक है. So this grouping thing will actually help you to hide and unhide your rows and columns as well, ठीक है. So similarly you can group or ungroup or hide or unhide your columns also, ठीक है. This symbol over here will actually help you to hide and unhide your rows and columns, right? So apart from this, we also spoke about your print titles. जब आप print settings की बात करते हैं, page break preview, print title, wherein बहुत बड़े data अगर print कर रहे हो तो sequence क्या होनी चाहिए, पहले columns print होना चाहिए या फिर all rows should get printed, and then हर पेज में column header and row headers अगर है तो you have to fix it in every page. So these are some things that we were talking about in the basics concept. जब basics concepts discuss किया, we spoke about all of these things, right? Now there is one more concept called linking worksheets. How do you link worksheets? There is one concept called 3D formulas, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस पर्टिकुलर शीट, आज जब हमने वी लुकअप पढ़ा था, वी लुकअप में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली गोइंग टू द अदर शीट, मास्टर एम्प्लॉई लिस्ट में जाके आपने ये टेबल सिलेक्ट किया था, राइट. सो व्हेन यू आर लिंकिंग एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाके फॉर्मूला फिल करते हो या कंप्लीट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड 3D फॉर्मूला एंड दैट एक्चुअली लिंक्स डिफरेंट वर्कशीट्स. इफ़ यू कुड सी ओवर हियर इन योर फॉर्मूला बार, यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर एम्प्लॉई लिस्ट, तो एक वर्कशीट से आप दूसरी वर्कशीट पे जा रहे हो ना, सो दैट इज लिंकिंग फॉर्मूलाज, राइट. लिंकिंग वर्कशीट्स एंड 3D फॉर्मूलाज. इसमें कुछ नहीं करने, जब आप फॉर्मूला यहाँ पे डालते हो, यू जस्ट हैव टू गो टू द रिक्वायर्ड वर्कशीट, click on the whatever your cell or you select the table, then come back to the next sheet and so on and so forth, ठीक है. That is linking worksheets. Now we are going to talk about another concept, ठीक है. I'll just this was my 103 exercises sheet. I'll just open my 102 exercises, उसमें I will talk about the other concept, ठीक है. So this is my Excel 102 exercises sheet. इस वर्कबुक में अगर आप बॉटम में देखोगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, you have 3 sheets, 2013, 14 and 15, and then in the 4th sheet you have something called summary, ठीक है. So 2013 में for 5 different towns I have a circulation data over here. 2014 के लिए for the same 5 towns I have a different data, and for 15 I have another different data. Now in the summary for last 3 years की collective circulation क्या है, ये मैं find out करना चाहती हूँ, ठीक है. So for this, rather than clicking equal to going back and forth for 3 different sheets, I can use an option called the consolidate option, data consolidation, ठीक है. So I can go to my data tab in the ribbon. Under data tools I have something consolidate, ठीक है. It is asking me मेरे को कौन सा function run करनी है, ठीक है. So I am going to say I want to run the sum function only. It is asking me the reference. So for the first reference I go to my 2013 and I click from B4 to B8, ठीक है. I come back and I just add it. Alright. This is already added. Let me first delete all of this.
ठीक है. So I've added 2013. I'm going to go back to my 2014, select this particular data. I'm going to come back and add it. ठीक है. I'll go back to 2015. I'll select this data. I'll come back and I'll add this. ठीक है. So I have three different data selected. I'm just going to say OK. So I got my total circulation for all of the 5 towns. ठीक है. This is called consolidate, wherein आप एक क्लिक पे सारे डेटा कंसोलिडेट कर रहे हो एक जगह पे. ठीक है. आप अलग से कोई फंक्शन रन कर सकते हो. इसमें ज़रूरी नहीं है आपको सम ही यूज़ करनी है. यू कैन यूज़ मैक्सिमम, मिनिमम, इवन स्टैंडर्ड डिविएशन. So, अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन click these check boxes. You can say use labels in top row and left column. So when you are selecting this entire table, then you can select on these two options over here. ठीक है. There is one option called create links to source data. It means एक hyperlink जैसे create हो जाती है. So let me just start from the beginning and show you everything again. ठीक है. Just a second, I'll just delete this. So I'm going to my consolidate option. I'm going to say my reference is 2013 में जाके I'll select this entire table and I'll add it. 2014 में I will add this table, and in 15 I'll just add this table. ठीक है. So I'm going to say my labels are there in top row as well as in left column. I'm also going to create a link to source data. If I'm going to say OK, I got my output, but in addition I also got an extra column with the titles, with the labels. So the plus symbol over here in your left hand side, those are the hyperlinks. It will actually tell you that कहाँ से आया है ये data. ठीक है. ये जो total data है, from where it has come. ठीक है. So these are the hyperlinks that have been created. You will actually know from where your source data is coming up from, right? So that is data consolidation or consolidating data. So we have another interesting concept in Excel. So instead of cell references, you can use cell name ranges. ठीक है. For example, मान लो this is actually the sum of these three cells, right? Say for example you want to मान लो ये सारे चीज़ों का आपको सम निकालना है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, पहले सब कुछ सिलेक्ट किया. ठीक है. आई एम गोइंग टू माई नेम बॉक्स and I'm going to name it. Say I'll say circulation. ठीक है. I'm just naming it as circulation. Now if I want to calculate the sum for this particular range, I can simply write equal to sum and circulation. I think this is what I wrote there. I hope it's the same spelling. It's not, I think. So I think there was some spelling mistake or something. तो अब आ गया. ठीक है. तो क्या किया मैंने, पहले सिलेक्ट की थी सारी चीज़ें. ठीक है. Then I went to my name box. I gave it a name. You can give any name, month 1, month 2, week 1, week 2, any name. ठीक है. I am giving circulation over here. I clicked on enter. ठीक है. फिर यहाँ पे I applied the formula. Let's say equal to average, and instead of cell reference I can simply give the name range, the range of that particular name. देखो जैसे मैंने circulation लिखा, it is appearing in color code, right? Now I'm getting the average, right? So you can use this for any function. Instead of cell references, you can simply use the concept of name ranges. You are giving
a particular range a name. ठीक है, that is why it is called name ranges, right? Now we are going to talk about something called auditing an Excel workbook. ठीक है, auditing an Excel workbook or Excel worksheet is simply on checking कि क्या क्या चीज़ें आपने किया है, सही किया है कि नहीं. It is simply checking on how you've been doing, right? So now say for example, I'm going to my data tab. I think it is in data tab only. Sorry, formula tab. ठीक है, formula tab में there is something called trace precedence. ठीक है, you click on trace precedence, it will simply tell me that ये formula, ठीक है, इस formula में जो भी चीज़ें use हुई हैं वो कहाँ से आए हैं. ठीक है, what if I'm using certain cell references in this formula, what cell references am I using, I will get those arrows. ठीक है, if I click over here and I say trace dependence, ट्रेस डिपेंडेंट मतलब कौन कौन सी सेल इस सेल से डिपेंडेंट है. ठीक है, प्रेसिडेंस इज सिंपली टू यू सीइंग विच सेल्स हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्मूला. ठीक है, तो डिपेंडेंट मतलब कौन कौन सी सेल्स इस एक पर्टिकुलर सेल पे डिपेंडेंट है. ठीक है, व्हाट सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल्स. ठीक है, that is trace precedence and trace dependence. You can go to any sheet where you've applied formulas and you can find out how precedence and dependence moves. ठीक है, if you click on remove arrows, all arrows would be removed. ठीक है, so let's see इस sheet में how precedence and dependence are working. ठीक है, so let's go to our data tab, sorry, formulas tab I think. Yes, formulas tab, formula auditing में you have trace precedence. So let me keep my cursor over here. ठीक है, and I'm clicking on trace precedence. So trace precedence means to know which cells have been used in a particular formula. ठीक है, अगर यहाँ पे रख के आई एम सेइंग ट्रेस प्रेसिडेंस, कौन कौन सी सेल इस फॉर्मूला में फॉर्मूला के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, योर मंथली गोल एंड योर टोटल्स. ठीक है, so if I'm going to keep my cursor over here and click on dependence, I'm going to find out कौन कौन सी सेल इस सेल पे डिपेंडेंट है, right? So you know wherever we've applied these formulas कौन सी cells कौन सी formula इस cell पे dependent है, सब पता चल रहा है हमको. ठीक है, so that is precedence and dependence. The next thing over here in formula auditing, you have, of course you can remove arrows by just clicking these drop downs over here. ठीक है, तो आप सिर्फ precedent arrows remove कर सकते हो, dependent arrows और all arrows, right? So you have something over here called watch window. ठीक है, so whenever your formulas are coming from two different sheets, for example in your VLOOKUP you use two different sheets, right? So a watch window will simply help you to notice, अगर आप कोई change दूसरी sheet में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. ठीक है, so that is a watch window wherein you can monitor 2 or 3 sheets at the same time, right? So I'll just show an example of it. For example, let's say over here I am applying some formula. ठीक है, equal to I am applying the sum if formula, लेकिन मैं यहाँ की values ले रही हूँ. ठीक है, the range is, see this is the range. ठीक है, and my criteria is it should be greater than say 2000. Alright, and some range is optional, so I'll just close my parenthesis, I'll click on enter. So I got my value over here. Now this value is dependent on these values, right? So let me create a watch. Okay, so I'm selecting on this cell and I'm going to watch window and I've added this particular, I'll just add watch. Okay, and I'm adding this particular function, just add. Alright, so if I'm going to my sum if page and if I'm changing some value over here say to 2500, okay, ध्यान से देखोगे value भी change होगी. ठीक है, I just click on enter, you can see my this value also changing. So rather than going back and forth and checking whether my value is changing or not,
यूजिंग अ वॉच विंडो जहाँ पे आप यू आर वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट शीट्स, यू कैन चेक वेदर द वैल्यूज आर चेंजिंग और नॉट, ठीक है, कोई करेक्शंस तो नहीं हो रही, गलतियाँ नहीं हो रही, तो यू कैन जस्ट मॉनिटर 2 शीट्स एट द सेम टाइम यूजिंग अ वॉच विंडो, ठीक है, दैट इज वॉच विंडो एंड इट इज़ यूजफुल फॉर फॉर्मूला ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग में बेसिकली हम चेक कर रहे हैं ना कि आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं, यू आर रेक्टिफाइंग मिस्टेक्स, यू आर जस्ट सीइंग वेदर एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट, ठीक है। सो आई जस्ट क्लोज दिस वॉच विंडो। नाउ अंडर सेम फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले ग्रुप में यू हैव समथिंग कॉल्ड शो फॉर्मूलाज। इफ यू क्लिक ऑन शो फॉर्मूलाज, all the cells which is using formulas will appear like this, ठीक है, that is show formulas. So even when if in case in your practical someone is asking you, वाइवा में कोई पूछ रहे कि आपको ये आंसर्स कहाँ से मिले, कैसे कर रहे हो आप, so you can simply show the formulas and show the evaluator that you've been doing it, ठीक है। even in the practical classes, in our practical classes, if I'm telling you to share your screen, you need not go and double click there and show me this kind of a formula. You can just go to formula auditing and click on show formulas, ठीक है। So we are going to talk a little more about protecting your worksheets and your workbooks. If you remember, जब हमने फाइल टैब के बारे में बात की थी तब थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी हमने, but not in detail, right? So over here we are going to talk about it in detail. Just go to your home tab. So protection हम इसीलिए करते हैं, आपने एक तरीके से एक फॉर्मूला लगाया है, एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज़ किया है. For example, I have used some colors over here. I don't want to change, I don't want anyone to change the color code or mess up with my formatting. So in that case I want to protect my worksheet, ठीक है। If you go to your home tab, under font group में there is this छोटा सा symbol that is there at the end of the bottom right, ठीक है। Just click on that and if you could see over there protection का tab होगा, एक dialog box खुलेगा and you will find a protection tab. You have two options, one is locked and hidden. Excel में all the cells by default are locked, ठीक है, हर cell locked होती है Excel में, ठीक है। So just unselect this and just say OK. Say for example I want to lock this particular cell, यहाँ पे मान लो यहाँ पे I want to do this, so I'll just go back, go to protection, I will unselect this, I am not locking it, ठीक है, I am going to click OK. Now I go to my review tab, ठीक है, and I am going to go to protect sheet, protect worksheet, and over here I will select unlocked cells, ठीक है, I will give a password and I will protect the unlocked cells, ठीक है। So let's say I am giving a password over here, ठीक है, I am saying OK, I am re-entering my password and I am saying OK, ठीक है। So यहाँ पे I cannot do any changes. In this particular sheet, I will not be able to do any changes. Everything would be password protected whenever I am sending it to someone, ठीक है। Me, however, I can do it, but if another author is working on this, they will not be able to do any changes, ठीक है। So you can unprotect the sheet by using the same password as well. ऑलराइट। सो सिमिलर वे में आप वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्कबुक में या तो आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू एंड यू कैन insert a password and protect your workbook. And workbook in the sense a collection of all worksheets. This entire Excel file will be protected, ठीक है। Once you apply a password and once you protect it, ठीक है, so you cannot rename it, you cannot add anything, you cannot copy anything, everything in this structure will remain protected, ठीक है। In fact, even when you protect certain cells or when you protect a certain sheet, the you cannot insert or delete columns or rows, ठीक है, everything would be fixed however it is, ठीक है। So in fact you can also go to your file tab and उसमें info में जाके भी आप protect कर सकते हो अपने workbook को,
यहाँ पे भी जाके आप पासवर्ड डाल के अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो. हियर यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स whether you want to protect the current sheet or the workbook structure or entire workbook, or you want to add a signature, anything. So these are certain protection features in Excel, and I hope it's clear enough.